Hello students, welcome to economics classes. So students, in the previous video we have discussed about what are total fixed cost, supplementary cost और overhead cost. आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं what is average fixed cost AFC. बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैसे अगर फॉर्मूला की बात करें तो इट इज माई TFC अपॉन आउटपुट, यानी अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा AFC. AFC is the per unit fixed cost of producing a commodity. AFC derived by dividing the total fixed cost by the number of units of the commodity produced. For instance, if total fixed cost of a producing 10 pence is rupees 100, then AFC will be rupees 10. AFC equal to TFC upon number of units produced, 100 upon 10, that comes to 10. Total fixed cost remains fixed at different level of output. Consequently, when units of output increases, AFC falls. The concept of AFC is shown with the help of table and diagram. बेटा यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, TFC सब में 10, 10, 10 था. AFC क्या होगा बेटा? TFC अपॉन आउटपुट 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.3. अब बेटा इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस. तो जो रेक्टेंगुलर AFC जो कर्व है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. MCQ में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ AFC? इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस AFC के बारे में. Graphically, AFC curve will be a downward sloping curve. This curve will never touch x-axis because AFC can never be 0. However, large the level of output may be. Similarly, AFC curve never touches the y-axis. It is so because TFC is positive value at 0 output, and positive value divided by 0 will provide infinite value. So, beta AFC curve is a rectangular hyperbola. The AFC curve continuously decreases as output increases because the numerator of the ratio, that is TFC upon output, is constant while the denominator increases. यानी AFC equal to TFC upon output, numerator constant है और denominator increase होता जा रहा है, so AFC decreases. Now students, the next point is what are total variable cost or direct cost or prime cost. Variable cost are cost which vary directly with the change in the size of output. हम लोग नट सेल में कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर सच कॉस्ट विच वेरीज विद द आउटपुट. अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा 0 भी हो सकता है. These refer to that part of total cost which are incurred on variable factors of production like labor, raw material, power, fuel, wear and tear of machinery, etc. The supply of variable factors can be changed according to the level of output. Such cost increases when output increases and decreases when output falls. That is why they are called direct cost, because they change directly with the change in the level of output. When the production stops, variable cost becomes 0. TBC are also called prime costs. TBC are shown in the below table and diagram. The total variable cost curve moves upward with the increasing output. So beta, we can understand this TBC curve with the help of a schedule. बेटा आउटपुट देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, आउटपुट 0 है तो TBC 0 है. 10, 12, 15, 24, 50. अगर मैं इसको प्लॉट करूं आउटपुट और TBC, इट वेरीज विद द आउटपुट. अब जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो मेरा TBC बढ़ता जा रहा है. और बेटा लास्ट इसके बेस पे जो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. बेटा ABC क्या होगा? TBC अपॉन आउटपुट. अब बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी. This is calculated by dividing TBC by number of units produced. For example, if the TBC of manufacturing 10 pence is rupees 100, then ABC will be rupees 10. ABC equal to TBC upon number of units produced.
द कॉन्सेप्ट ऑफ ABC इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड डायग्राम। अब बेटा देखो यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5 TBC ऊपर का क्वेश्चन है बेटा 10, 12, 15, 24, 50। ABC 10/1, 12/2, 15/3, 24/4, 50/5। तो बेटा ये AFC आ गया। अब बेटा देखो ABC को मैंने प्लॉट करूँ, इट फर्स्ट डिक्रीजेस, remains constant and then increases. So the shape of ABC curve is just like a U-shaped. It is a U-shaped. In the beginning, ABC decreases, but after reaching the stage of minimum cost, it starts increasing. ये बेटा जो है ना ये मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पहुंचने के बाद ABC मेरा इंक्रीज होने लगता है। सो बेटा this was all related with the average variable cost. In the next video, we will discuss about the marginal cost. That's all for today. Thank you.